हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको देखें तो ये फिजिक्स मैथ्स हर फील्ड में यूज होता है। फिजिक्स में भी आप अगर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देख सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशंस, सारी मैक्सवेल इक्वेशंस वेक्टर्स बेस्ड हैं। कर्ल ऑफ अ फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड. Similarly, if you go to the fluid mechanics or if you go to the quantum mechanics, in each and every field of the physics, maths, you always counter the vectors. So vectors, we can have the vector product or the scalar product, and also we have various properties of the vector dynamics like the del operator that can lead to a gradient of a function or a divergence of a function or the curl of the function. Gradient is just gradient of any scalar function phi, or the divergence is denoted as divergence of any vector A, or if you see the curl, it is curl of any vector A. So this is called gradient. और अगर आप डाइवर्जेंस देखते हैं तो ये आपका डाइवर्जेंस है, del of vector A, or this cross product is called the curl of any vector. So this is curl of A, this is divergence of A, and this is gradient of phi. अगर आप डेल ऑपरेटर चेक करें तो डेल ऑपरेटर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. डेल इज डिनोटेड एज del over del x of x cap plus del over del y of y cap plus del over del z of j cap. अगर आपके पास कोई फंक्शन फाई है तो अगर आपको ग्रेडियंट डिफाइन करना है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आप लिखेंगे del, same you will multiply this del operator with the phi, so it will be del, let me check it again, yeah, so del over del x of phi, this will be x cap plus del over del y of phi, that is y cap, and then you can write del phi over del g, j cap. So this is the gradient of any scalar field. Similarly, this is called gradient. Then if you want to find the divergence of any vector A, let me first define the vector A. Vector A is ax x cap plus ay y cap plus az z cap. Then if you find the divergence of this vector, so this will be del operator taken divergence with the vector field A, that is ax x cap plus ay y cap plus az z cap. So you can write this divergence as del ax over ax dx plus del ay over del y plus del az over del z. So this is the divergence. Similarly, if you find the curl, for the curl you can use the matrix property. Then the curl of this vector you can write by a determinant, where you are writing the x component here, y component here, g component here, then del over del x, del over del y, and then del over del z. And here you can write the corresponding components of the vector A. Okay, and if you find this determinant, this will give you the curl of the vector field. But okay, this is the basics of the vector algebra. But before let's now go to the question actually. So हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. लिस्ट 1 में हमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वेक्टर की. वेक्टर A इज इरोटेशनल, वेक्टर A इज सोलेनोइडल, a gradient of the scalar field or the divergence of the vector field. And list 2 में हमारे पास फिर से कुछ टर्म्स दे रखे हैं, लाइक divergence of the vector field is 0, or the curl of the vector is 0, or A is a scalar, or you can say the vector A is a vector. So these are the lists that we have to match. Which option will match to which? So let me first tell you what are the two terms, like what is the meaning of irrotational, what is the meaning of solenoidal. So let me do that first. Irrotational, as the name suggests, rotation means something is rotating. Rotating, like if you have a rod, let me write the word irrotational. So this irrotational word is made of two words. Ir means the something opposite to the rotation, and rotation means if you have a rod and you are applying a force F on both the side, the force to the upward direction and also force to the downward direction, then what we will see that about the center of mass, this particular rod will start rotating. So that means this
rod is having a tendency to rotate around, then what will be the meaning of irrotational? Irrotational means something that is not possible to rotate and something that is not rotating. In the fluid mechanics, if you see, let's suppose you are considering the ocean waves. So ocean waves, if you see, ocean waves are coming like this, but then when these waves reach to the shore, then what you will see that the wave will go like this and they will form some rotation like this. So waves are forming a rotation. So the rotation means they are having a tendency to rotate around the central point. So if you have a vector field, how will you say that a particular field have a tendency to rotate or the particular field do not have a tendency to rotate? This property we can actually define using the curl of the vector field. So we find the curl of the vector, or you can say it is as curl of A. And if this curl comes out to be 0, curl is 0, that means your vector A is irrotational. It is not rotating. और अगर ये कर्ल आपका नॉन जीरो आता है, curl of any vector is not equal to 0, then you will say that vector A is rotating. So it is a rotational vector. इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम चेक करते हैं कि हम किस ऑप्शन को मैच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में. So list 1 is asking that vector A is irrotational, and you can say that if it is irrotational, then its curl of the vector should be 0. So you can say the option A will match to option II. Okay, now let's see what is the solenoidal. Solenoidal क्या होता है? आपने देखा होगा कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि कोई फील्ड, कोई फ्लो, अगर आप देखें ये एक मेरे पास रीजन है, अगर कोई फ्लो इस रीजन से बाहर जा रहा है, दैट मींस वी कैन से दैट द फील्ड और द फ्लो इज गोइंग आउट, सो द डाइवर्जेंस इज आउटसाइड. सो यू कैन से द डाइवर्जेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड ए इज ग्रेटर देन 0. लेकिन अगर आप दूसरा केस देखते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि कोई फ्लो अंदर की तरफ आ रहा है, नेट फ्लो इज इनवर्ड, देन यू विल से दैट द डाइवर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लो A is less than 0. Let me write it again. Yeah. So it is less than 0 when the flow is inward. Now you will say, what will happen if the flow is some flow is inward, some flow is outward? Then we will say what is the effective flow. Means let's suppose some flow is coming inside the region and some flow is going outside the region. So this is, let's suppose, I in, and this is, let's suppose, I out. So if I out is more than I in, means your outward flow is more than the inward flow, then you will say that the divergence is outside, it is positive. So you can say the divergence of the field is greater than 0. लेकिन अगर दूसरा कंडीशन हुआ कि आपका आउटवर्ड फ्लो इनवर्ड फ्लो से कम है, मतलब चीजें अंदर कम ज्यादा आ रही हैं, बाहर कम जा रहा है, तो बेसिकली इफेक्टिव आपका जो कंटेंट है वो अंदर स्टोर हो रहा है. तो अंदर अगर कंटेंट स्टोर होगा, दैट मींस योर डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड विल बी लेस देन 0. देन यू मे थिंक व्हाट विल हैपन इफ बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो आर द सेम. मींस जितना आप अंदर इनपुट दे रहे हैं उतना ही आपको एग्जैक्टली आउटपुट मिल रहा है. उस केस में हम क्या बोलेंगे कि फ्लो कंटिन्यूअस है, देयर इज नो स्टोरेज और देयर इज नो एक्स्ट्रा गोइंग आउट ऑफ द फील्ड, और यू कैन से जितना भी हमें इनसाइड मिल रहा है इट इज लाइक अ लूप. एक लूप बन गया आपके पास, जितना आपका बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा, जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा. तो इस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं कि दिस केस में हमारा डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0. इसको आप मैग्नेटिक फील्ड से भी कनेक्ट कर सकते हो. आप एक बार मैग्नेट लीजिए, ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है. तो क्या होगा, फील्ड लाइंस अगर आप ड्रॉ करें तो फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी और इनसाइड में वो फिर से साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगी. सिमिलरली फिर से अगर आप ड्रॉ करें, ऐसे ही आप सारी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. सो क्या हो रहा है इन फील्ड लाइंस में, इफेक्टिवली जितना आपका फील्ड नॉर्थ से, फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, उतनी ही फील्ड लाइंस आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही हैं. तो नेट जो फ्लो है, नेट फ्लो इसका क्या है, 0. दैट्स व्हाई हम से the Maxwell second equation what says that the divergence of B is 0. Why it is 0? Because the effective flow of the magnetic field or effective field lines are
forming a closed loop. There is no single loop, or there is no open loop. So they are the closed loop. So whenever you have a closed loop, then you will say that the divergence of the quantity is zero. And when the divergence is zero, then we also say that the field B in that case is called as solenoidal. सोलेनोइडल मतलब कि आपका डाइवर्जेंस जीरो हो, और इरोटेशनल मतलब आपका कर्ल जीरो हो. फिर से हम लिस्ट चेक करते हैं. लिस्ट में क्या है, आपका पूछा है कि द फील्ड इज सोलेनोइडल, और इसका मतलब क्या होगा कि हमारा डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड शुड बी जीरो. दैट मींस ऑप्शन बी विल मैच टू आई. सी ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें पूछा है ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड. अभी मैंने आपको बताया ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड फाई, एंड यू कैन सी phi is a scalar quantity, but if you are taking the gradient of this, then what you are getting? You are getting a vector quantity. So that means gradient of any field is always a vector quantity. So we can say the C will match to 4. Similarly, if you find the divergence of the vector field, you have a vector field A, and now you are finding the divergence. So the divergence of the vector field is given by this expression. If you calculate this, you are getting this expression. इस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप कंपोनेंट दिख रहा है? नहीं, ये सिंपल एक स्केलर नंबर आपको दिख रहा है. दैट मींस द डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो जब भी आप किसी चीज का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस दैट लीड्स टू अ scalar parameter. So you can say that divergence of this particular vector field is always a scalar quantity. So option D will match to III. So these are the matchings. Let me repeat what I say here. Whenever you have a irrotational vector, that means your flow is not having any tendency to rotate. There is no rotation. It means your curl of the field will be zero. Whenever a field is solenoidal, that means effective flow is zero. जितना आउटसाइड फ्लो है उतना ही आपका इनसाइड फ्लो है, और ओवरऑल आप बोलेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ दैट क्वांटिटी इज जीरो. Then gradient of the scalar field, you know the gradient, if you are calculating, you are multiplying the scalar field with the del operator, and del operator is already a vector quantity. That means the gradient will come out to be a vector. And similarly, divergence, if you calculate, you are getting a scalar quantity. So this is all for this video. I hope this video will be helpful for your upcoming exams, NET, GATE, every exam. This particular concept is helpful. Along with that, this is actually helpful in if you are doing a research also. So if you like this video, please like it, share with your friends. Thank you.